to Chapter of Teenage, the podcast where we dive deep into the issues that matter most to the teenagers. I'm your host, and today we are discussing a crucial topic, the importance of self care and mental health awareness for teens. Join us as we explore ways to prioritize well being and build a healthy mindset during these formative years with my very special first guest and my sister Shreya. Hi, Dee, how are you? Glad that you are here. Hi Tanishka, I'm glad that I'm here too. हाँ, तो जैसा कि हम अभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और सेल्फ केयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अ, तुम्हें ऐसा कौन सा डिफरेंस लगता है हमारी टीनेज लाइफ में और तुम्हारी टीनेज लाइफ में? सी मैंने तुम्हारी टीनेज लाइफ उतनी देखी नहीं है, बट what I basically understand is that we lived a very simple life as a teenager. When we were in school, we had a group of people there, and when we were in at home, we had a lot of people here as well. So every evening we would go out, play with them. You might have seen us play kabaddi kabaddi with our friends, right? So वो सारी चीजें थी, प्लस बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग करते थे उस टाइम पे, बिकॉज वी डिडंट हैव दैट प्रिविलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम. कुछ भी करना होता था, we did not have a laptop, so we had to go to cyber cafe, and we didn't have our phone as well. So anything that we would have to do, we'll have to go to the cyber cafe, and that also we did only because when we had to make a project or something like that. Okay, we were not that kind of a person जो cyber cafe जाएगा, spend करेगा, and we'll play some games or something like that. We would not do that. But I see that technology is very easily accessible this time, and I see you are constantly there on your phone all the time, right? So the point is that you guys have access to a lot of knowledge, a lot of information, a lot of social media as well. So you guys have a lot of virtual friends, a lot of isolation from real world, I can say. I'm not saying it is bad, I'm saying it is good in certain senses, but that there are some issues as well related to this, right? So you guys sometimes feel a little isolated, a little depressed. Your focus span is a little less because you constantly scroll reels, right? So all those things are included. So there isn't much difference with respect to emotions, but then yeah, with respect to how much access you have of information and internet and phones, I mean that is there. ओके ओके, कुछ ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस बता दिया तुमने, तो चलो कोई बात नहीं. It was not bada. It is bada actually, but then it's very subtle. It comes with time, right? So okay. ओके ठीक है, तो मैं तुमसे ना ये अब इस टॉपिक के बारे में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो टीन लाइफ होती है उसमें सेल्फ केयर इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? You know, the teenage life is a very, very delicate life of your entire life cycle. So you are a kid initially, and all of a sudden you see so many changes happening with your own self, with how people start behaving with you, right? So you're no longer a kid, plus you're also no longer an adult. So, I mean, you get very insecure about your own body, how you should be behaving in public as well. How should you treat your own self? People want you to be a little more responsible. And there are so many emotional changes also that you guys go through, right? I have also gone through. You are currently going through. So everything is very delicate, I would say. And people say that the formative years start from, since your childhood, but then the real formation that actually happens during ये वाला time, तुम्हारा teenage period में. So if somebody tells you something or they scold you something, you will take it more seriously. थोड़ा हम लोग अपने emotions को handle नहीं कर पाते हैं उस time पे, is what I feel.
So self-care, again coming to self-care, I don't know what to say, but then तुम मतलब what we can do is थोड़ा बहुत we can journal, we can put your thoughts down on paper, we can you know talk पॉजिटिव एफर्मेशंस अबाउट आवर ओन सेल्फ हम लोग बहुत टाइम ऐसा होता है जब बहुत नेगेटिव टॉक करते हैं खुद के साथ वी स्टार्ट टेलिंग अस ourselves that we are not good enough because we failed a test, right? और मे बी किसी ने डांट दिया तो हम लोग उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट रेमिनिसिंग अबाउट द सेम थिंग. तो चीजें बहुत अंदर तक चली जाती हैं खुद के एंड it gets expressed in some other way later on in the life. Okay, when some things constantly happen to you constantly over a period of time and you keep telling yourself about the same thing and you start believing it, so it is not healthy. I mean, definitely if you start with negative things and you start imbibing all those negative things about yourself, later on in your life you will start, it will come out in a certain way. You will not even realize that you're doing something wrong, but future may you never know, right? What kind of expression comes out because of some emotions that was very much layered in your own self. So self-care is very, very important for teenager because that is the time when you are growing, and that is the time where you should treat yourself with utmost care because the time is a little delicate. Okay. और मेरा तुमसे ना next question is like what are the practices that we can take care of ourselves and what were the practices that you used to take care of yourself during these years? यार मैंने तो कोई भी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस नहीं की. मुझे तो पता भी नहीं था कि सेल्फ केयर करना भी होता है. बट देन एज वी ग्रो अप अभी मैं देख रही हूँ कि कैसे लोग इफेक्ट हो रहे हैं छोटी छोटी चीजों से, सोशल मीडिया से. उस टाइम वी स्टिल हैड अ लिटिल थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर थे, चीजें उतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं करती थी जितना जल्दी आजकल करने लगी हैं. तो उस टाइम पे as far as what I remember, when I was in my 9th standard, I felt a little, थोड़ा अजीब सा आप बोल सकते हैं. I don't know what to call that exact feeling. Then I heard a friend of mine at that time that she would put her thoughts down on paper. She was a very good friend of mine. She was in my class. And when I heard that, okay, we can write our thoughts down as well. I mean, we don't have to constantly think all those things, है ना, जो हम सोचते रहते हैं उस टाइम पे. तो फिर मैंने लिखना चालू किया. कोई भी ऐसा दिन होता था जब मैं थोड़ा परेशान रहती थी या कुछ ऐसे थॉट होते थे जो इफेक्ट करते थे, तो मैंने स्टार्ट किया लिखना. और but that was the only practice that I followed. Okay, I mean, I really don't remember anything other than that. I would meet friends. I would go to tuition, and tuition के बाद थोड़ा सा मस्ती कर ली. That is all the things that we usually do. But specifically self care करने का, I don't think so. There is something very specific that I have done. But I would really suggest you to journal and take care of your mental health. Start using your to do list. उसको पूरा करो. पूरा नहीं हो रहा है तो परेशान मत हो. Understand your own self. अपने emotions को as a third party देखो. Why are you feeling certain emotions? All those things, ऐसे करना चाहिए अभी के टाइम पे. अभी का टाइम I feel is a lot more crucial than the previous times. Okay, I mean, yeah, that is one thing. I think that is all, yeah. But I would really love to know what do you do, Tanishka, for your self-care practices. I mean, for your self-care, what all practices do you have? Like I have 2-3 practices which I like really do. Do you really have? Yes, I have. Okay, I have. Okay. So it's like I had already told you, like I learned writing from you only. Like when you used to write, we are cousins. Like we live in same house, so there are certain things that I have learned from you, right?
So I learned writing from you, and that is when I started when I get really upset from anyone, I like to write that thing on a diary, and I write it again and again so that those feelings come out in form of tears. Like I basically it's like venting out your feelings. Right. So like it makes me feel very ease and relaxed. So yeah, this is one of my really important things of taking self care. Yeah, seems like writing down is very, very effective, right? Yeah, because it's like that you write those thoughts in their words, I write it in their words, and then I write it in my words. Okay, and then I think that what they said and why they said that. Correct. So Coming to the why of anything is really yeah, why they said that, maybe I was wrong or maybe they were wrong, it was their perspective, why to think about that. So like I take so many questions. Okay, and then I start overthinking about that. और फिर वो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो आंसू की फॉर्म में बाहर आ जाती है, रोने के फॉर्म में बाहर आ जाती है. आई थिंक अभी तो मैंने रोना भी बंद कर दिया, बहुत टाइम हो गया रोए हुए मुझे आखिरी बार. लेकिन ठीक है, जब बहुत ज्यादा ये सारी फीलिंग्स आपके ऊपर हावी हो जाए तो आपको रो लेना चाहिए. दैट्स बेटर. हाँ, that's better. But if you're writing it down, that is also good. हाँ, तो हम लोग सेल्फ केयर और की बात कर ही रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है. तो ये बताओ कि जो सेल्फ केयर होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे मेंटल हेल्थ में और कैसे करता है? ओके, जैसे तुमने अभी बताया, राइट, यू स्टॉप्ड क्राइंग व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग डाउन थिंग्स, राइट? हाँ. So, I mean, that is one way of taking care of your mental health. If you're writing things down, so you're venting out and then that overthinking stops, right? हाँ, बट मेरी तो रुकी नहीं बच्चे, मेरी और बढ़ गई है. Seriously? हाँ, मतलब एक चीज होती है, जैसे मान लो कि अभी लाइक माय फ्रेंड इज अपसेट, ठीक है, मुझे लगा कि वो अपसेट है. अब मैं उसके 1000 तरीके निकालती हूँ, ठीक है, कि वो क्यों अपसेट हो सकती है, क्यों मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि मेरी गलती है. मुझे हर जगह ना अपनी गलती दिखती है कि कुछ भी हो जाए वो मेरी गलती है, पता है. नहीं, you should not take things like that way. हाँ. You should, इतना नहीं सोचना होता है. अगर कुछ तुम्हें लग रहा है confusion state है, you just go there and clarify things. If you start thinking about the same thing again and again, it will create a loop in your mind and it will become a habit, in the long run. So just, I have suffered through it. I would not let you, get into the same trap of overthinking when things can be sorted out immediately, right? And habit नहीं बनना चाहिए. Okay? हाँ. And what do you think? I mean, this is one challenge that I see that you are facing. What else do you face, yeah, Tanushka? See, मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज इज टू सर्वाइव बिटवीन यू गाइस, क्योंकि तुम लोग जो हो ना भाई, वो पढ़ने में इतने सही भाई, बढ़िया लोग, नौकरी वोकरी कर रहे हैं अभी, ठीक है. तो पापा को हमेशा से मेरे से यही था कि दैट तुम भी इनके जैसा बनो. मतलब कि वो हमेशा नहीं कहते, बट कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है. तो मेरे लिए ना ये बार बार सुनना बहुत ज्यादा अपसेटिंग हो जाता है, चैलेंज ऐसा हो जाता है. मुझे याद है, मुझे कभी एक बार इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि मैंने लिटरली भैया को कॉल करके बोल दिया था कि तुम क्यों हो इतने अच्छे भाई, तुमने ऐसा क्या किया कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. तो मैंने भैया को फोन करके बोला था. तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि वो लोग क्या कहेंगे. आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मुझे कॉमर्स चूज करना था, तो पापा ने ना फॉर्म पे साइन करने से मना कर दिया था. ऐसा नहीं था कि वो किए नहीं थे, बट मुझे फिर भैया को कॉल करना पड़ा कि मुझसे साइंस नहीं होगी, प्लीज बता दो इनको. हाँ, तो ये सारी चीजें हैं. उसके बाद से आजकल के जमाने में हम लोग दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं, खुद के पर्सपेक्टिव. हम ये नहीं सोचते कि क्या हम इस चीज के लिए बेटर है या नहीं. पर अगर कोई दूसरा कह दे कि नहीं तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो या तुमसे नहीं होगा, तो आप बदली एक चीज लेके बैठ जाते हैं कि हाँ हमसे नहीं होगा. तो 4 लोग क्या कहेंगे ना, ये बहुत बहुत मैटर करता है हमारे लिए इस जमाने में. तो यही तो बेसिक चैलेंजेस है जो अभी मैं फेस कर रही हूँ, लाइक पीयर प्रेशर और ये 4 लोग क्या कहेंगे वाला जो सीन है, ये खत्म ही नहीं होता. ये कभी खत्म होगा भी नहीं. And people will keep, bothering you with the same thing. And मतलब देखो, सबसे पहली चीज तो तुम्हारी जो तुमको कंपेयर किया जाता है, आई थिंक विथ रिस्पेक्ट टू, आई मीन देयर पर्सपेक्टिव से देखो तो they're correct at their place, but they don't know
Yeah, correct. But they don't know that how comparison kills, right? See, the thing is कि सबको बहुत खुशी होती है कि तुम सारे ही बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बट थिंग इज दैट आई एम डिफरेंट. मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं हर कैपेबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल. कैपेबिलिटी की बात नहीं करी, मैं इंटरेस्ट कह रही हूँ. मुझे मैथ्स और साइंस में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं, ठीक है. Right. तुम लोग इंटरेस्टेड थे, मुझे था कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैं उस फील्ड के हिसाब से पढ़ रही थी. And you're doing good also, Tanishka. I mean, the point is that they don't know that comparison karna is wrong, right? And since now I would say that you are so grown up and you are running this and you know things better, I would say that instead of trying to change them, because you know they won't change right now immediately, right? और अभी change करने का कोई मतलब भी नहीं है. You just be okay in your own self. If you're choosing something, तो सोच लो कि हाँ, this is my choice and this is based on these reasons that I have, right? उसके बाद चार लोग क्या कहें, comparison हो, वो सब matter ही नहीं करेगा when you are so solid about your own decision. तो I don't think anything else is going to matter. थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, but then you have to remind your own self constantly, again and again, ताकि वो एक habit बन जाए to know that you are okay with the decision that you are making, right? But ऐसा नहीं है कि अगर तुम okay हो तो you are not listening to other people. मतलब उनका सुनो, समझो, what are they trying to tell you, है ना? And if it aligns with your thought process, it's well and good. If it does not, you have to question that as well. Why is it not aligning with my thought process, right? तो दोनों aspect देखना है, समझना है, और you know, do what you feel is the right thing for you to do, right? But do not neglect anybody, do not ignore anybody, do not shut anybody down. You have to listen to every single person who comes into your life, tells you something, analyze what they are telling, and then take whatever information you have to take from there, right? ठीक है. क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत कुछ बता के चले जाते हैं. Like everyone has their importance in your life, so like you should consider them. हाँ, and you should have your own boundary as well. अगर boundary नहीं है तो तुम सब कुछ अपने अंदर ले लोगे, right? If they are telling you नहीं तुम बुरे हो, you don't know to do this, you don't know how to learn science, you should have taken science, तो तुम वो अपने अंदर ले लोगे, and then you will start thinking about whether अभी साइंस लेना चाहिए था क्या, कॉमर्स लेके गलती कर दी क्या, पता नहीं, शायद साइंस में इंटरेस्ट आ जाता. लेकिन अभी तक जब साइंस में इंटरेस्ट आया नहीं तो अगले 2 साल में कैसे आएगा, राइट? हाँ. और कॉमर्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो अच्छी बात है. तो यू शुड बी सॉलिड अबाउट योर डिसीजन. नॉट वेवर अगर कोई कुछ बोलता है तो कि अरे नहीं, क्या पता उनको खुश करने के लिए ये करे तो दिल बिकम हैप्पी, या फिर the point is that you have to think about your own happiness and your own likings and your growth at this point of time. But also listen to them. Telling that सुनो ही मत. I'm telling that understand your own self, choose the path that you want to choose, while also having other people in your life trying to understand what they are trying to tell you and making a calculated decision of taking everything in consideration. तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, बात कर ही रहे हैं कंपैरिजन की और ये सारी चीजों की. जैसे हम जब टीनेज लाइफ में होते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के बीच में आ जाती है. मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम उनकी तरफ से सोचना नहीं चाहते और वो हमारी तरफ से सोचना नहीं चाहते. इट्स लाइक हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है. वो जनरेशन गैप तो आ ही जाता है हमेशा. हाँ, ऑलवेज अ जनरेशन गैप दैट यू विल फेस. मैंने भी फेस किया है, तुम भी थोड़ा फेस करोगे, मे बी फ्यूचर वाले बच्चे ना फेस करे, आई डोंट नो, बट दैट इज देयर इन योर जनरेशन, आई कैन सी. ऐसा तो रहता ही है. तो अभी जो है ना कि अभी पेरेंट्स इतना ओपन नहीं है इस चीज के बारे में, तो वो लोग कैसे केयर कर सकते हैं अपने बच्चों की सेल्फ केयर के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में. Like what can they do from their side to like protect their kids from these situations? क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही सेफेस्ट प्लेस होते हैं. कुछ भी होता है देन वी रन टू आवर पेरेंट्स, चाहे हम कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स में क्यों ना फंसे उनके साथ. हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट यार. बट I don't know how to talk about the parents' perspective and how they can be open with you. One thing मेरे को ऐसा लगता है कि whatever you are feeling, right?
और तुमको लगता है इस टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर if you have to go and talk to your parents but they are not agreeing to what you want to tell, तो चीजों को ब्रेक डाउन करके समझाओ उनको, हाउ आर थिंग्स इम्पैक्टिंग यू, how is their behavior, making you feel. You try to explain them, sit with them, है ना, अपनी चीजें शेयर करो बहुत डीपली, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर दे आर टेलिंग यू ऑल्सो. अगर वो बीच में इंटरप्ट भी करते हैं तो जस्ट टेल देम कि मेरी पूरी बात सुन लो, है ना. एंड even if that is not working out, you just keep repeating the same process. एक टाइम आएगा जब वो थोड़ा समझेंगे that हाँ, it is actually impacting you and their way of looking at life and your way of looking at life might be a little different. अभी they are adults यार, you cannot change them, right? अभी तुम अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करके you can try to make them understand your perspective. बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो सही ही होते हैं. जैसे कि हम क्या होते हैं कि हम इम्पल्स हो जाते हैं, हम बहुत सारी चीजें एक साथ लेके चलने लगते हैं. खास करके फ्रेंडशिप के डिसीजन में हम बहुत बहुत गलत स्टेज पे चले जाते हैं इस टीनेज लाइफ में. हमको कूल दिखना होता है तो हम What do you mean by friendship? Relationship? नहीं फ्रेंडशिप, आई मीन Okay. फ्रेंडशिप. Okay. रिलेशनशिप तो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हो जाता है. Okay. लाइक देखो, रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट इन टीनेज लाइफ. ठीक है, वो तो आपका वो लवी डवी फेज होता है तो यू आर ऑल गुड एंड फाइन विद दैट. बट स्टिल ये आप बच्चे होते तो आप इतना कुछ नहीं समझ पाते हो इस स्टेज पे भी, लाइक रिलेशनशिप वाले स्टेज पर भी. बट नहीं, मैं रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रही हूँ, मैं एज इन फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ. क्योंकि रिलेशनशिप तो एक बहुत ही डिफरेंट मैटर है. वो तो हम कई बार अपने पेरेंट्स से सीक्रेट, मतलब कई बार के हर बार ही सीक्रेट ही रखना पसंद करेंगे. Okay. हाँ, तो मैं फ्रेंडशिप्स की बात कर रही हूँ. फ्रेंडशिप्स में हम बहुत ही गलत डिसीजंस ले लेते हैं इस स्टेज पर. हम कूल बनना चाहते हैं, हम अच्छे दिखना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे गलत लोगों के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. तो इस वजह से हम बहुत गलत डिसीजंस लेने लगते हैं. हम एक तरह से गलत पाथ पे ही चले जाते हैं. तो वो सारी चीजें हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स सही होते हैं, वो लोग पहचान जाते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं. Of course, they have more experience than you, right? हाँ उन लोगों ने पूरी जिंदगी यही देखा है, लोग कैसे बिहेव करते हैं उनके अराउंड. हाँ तुम लोग आते हो उसके अराउंड भी, वो लोग बहुत, मतलब उनका पीपल पर्सपेक्टिव थोड़ा अच्छा है. क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमको लोगों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. So they will be right at their place only. You have to just understand what is good for you. वही चीज है. So I think this is the end of this podcast, and it was really nice talking to you. Like talking to someone who has already passed this phase, it means a lot. क्योंकि हम आपका पर्सपेक्टिव भी जान पाए और मैं अपना पर्सपेक्टिव भी रख पाई. So it was very nice talking to you. And आप हमारी पहली गेस्ट हो तो ये और भी स्पेशल हो गया. Oh, is it nice? Like Bhumi couldn't come to this podcast as she was quite busy. She was not at home right now. Okay. So she could not come. So I decided to do it with you. And it was really nice talking to you. It was refreshing. Like there were certain points that you were really sure about and correct. And I think there are many things that we can learn from you. So thank you for being here. And this is the end of this podcast. So let's stay tuned for the next episode. We'll have another very special guest with us. So yeah, this is it. Thank you.